द रीज़न वाई आई रिमूव एवरीथिंग नाउ इज़ बिकॉज एक लड़के ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया एंड ही आज मी कि उसको चाहिए एंड ही कम डाउन राइट नाउ बिकॉज ही इज़ अ बिगनर एंड उसको ही वांटेड सम टिप्स एंड ही वांटेड टॉक टू मी. थोड़ा बहुत हुआ, वो सब लंबा कहानी है. एंड ही टोल्ड मी प्लीज़ आप मेरे को स्प्रॉकेट और चेन दे दो. एंड ही आस्क्ड फॉर सम अदर पार्ट्स टू, बट वो पार्ट्स आई विल नॉट बी एबल टू गिव एज ऑफ नाउ बिकॉज मेरा कुछ और प्लान है. बताऊंगा इन ड्यू टाइम, सब कुछ बताऊंगा. एंड फॉर नाउ Mazikin is on the paddock and I'll be done with I am one step closer to putting Mazikin back to stock. Back to stock. भूख लगी है गंदी सी. Sprocket निकाल दिया and got the stock sprocket, the stock brake system, and for now I'll just be putting these back. हैंडब्रेक सेटअप निकालने के लिए थोड़ा बहुत दिक्कत होगा क्योंकि द ब्रेक लाइन इज़ गोइंग ऑल द वे फ्रॉम हियर और अंदर से somewhere through here, so that will be a little bit of complication. Anyways, for now I'll put the stock sprocket back on. Whenever you're changing a sprocket kit, always remember you हमेशा ऑपोजिट नट्स लॉक करना. अगर ये लॉक कर रहे हो तो फिर नेक्स्ट इसको करो, फिर अगर ये कर रहे हो तो फिर इसको करो, फिर ये कर रहे हो तो इसको करो. जब भी स्प्रॉकेट चेंज कर रहे हो मेक श्योर यू चेंज द स्प्रॉकेट रबर्स और द डैम्पनर रबर्स. तो वो क्या होता है, उसका जो प्ले होता है ये वाला, अभी इसमें ऐसा जो हिल रहा है, नए स्प्रॉकेट रबर्स डालने पे वो हिलेगा नहीं. The next thing is to open the chain sprocket car and put in the new drive chain sprocket or the GV sprocket. I don't want to remove all of this. मैं इतना सभी झंझट नहीं करना चाहता हूँ. आई थिंक इट बी अ होल लॉट सिंपलर अगर मैं बस चेन को कट कर लूँ और एक लॉक डाल लूँ. तो आई हैव गॉट एवरीथिंग दैट आई वांटेड. द चेन लॉक, द चेन लिंक रिमूवर एंड जो मेन काम था जो मेरे को करना था वॉज दिस. मेरे को ये करवाना था, बस इसको ग्राइंड करना था. अभी आई जस्ट हैड टू पुट द चेन बिटवीन दिस एंड इसको टाइट करके ये ऊपर वाले को टाइट करूँगा. द लिंक इज़ गोइंग टू कम ऑफ. The new sprocket is on and it's looking beautiful. Setup is done. पीछे का only. फुट ब्रेक ब्लीड भी हो गया and it is
working perfectly. And my little sister helped me do it. As I said, teach them young and they'll not have time for anything else. The last part would be removing the handbrake setup and putting the headlight back and the stock odometer back. Magic will be complete soon. Fingers crossed. द एंटायर हैंड ब्रेक सेटअप इज़ आउट. वायरिंग पूरी जो पैक किया था उसको भी खोल लिया है. कैलिपर्स तो पीछे से जो लटके थे वो भी, द कैलिपर्स आर देयर. Show something really cool to you guys now. Look at this. Local error. Okay, mode सही है. This is the actual reading जितना Magic चली है in 3 years. May 10th को it will be 3 years since I got Magic and 3000 kilometers in the odometer. And maybe another 500 to 1000 kilometers, hardly 500 kilometers after removing the mask or the headlight a couple of days back. Maybe hardly I removed it 6 months back maybe, and तब से 500,000 तो hardly 4000 किलोमीटर चला है गाड़ी. And anyhow, so we are almost done.
बस हेडलाइट एक डाल दूंगा तो विल बी डन। आई एम स्टिल थिंकिंग अबाउट द मिरर्स, डालूँ या नहीं। तो वेट, ब्रेक लाइट ब्यूटीफुल। हॉर्न एक नहीं चल रहा है, हॉर्न का क्या है इशू चेक करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग एल्स इज सेट। सीट को मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया था बिकॉज मेरे को उस वक्त अच्छा वाला कोई सीट मिला नहीं था मॉडिफाई करने के लिए। ओह, एंड यू आर नॉट अ स्टंट बाइक एनी मोर, सो इसकी ज़रूरत नहीं है। and a startup is a must. Bismillah. किल स्विच पता है मेरे को। बिस्मिल्लाह। हेडलाइट भी चलते भाई, हाई बीम, लेफ्ट इंडिकेटर, राइट इंडिकेटर, पीछे वाले भी। हॉर्न का कुछ करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज़ वर्किंग, ब्रेक लाइट तक। इसके बाद से मैजिकिन विल बी वन ऑफ माई डेली बाइक्स। अपार्ट फ्रॉम कुरामा आई हैव अ KTM Duke 250 एज यू ऑल नो बाय नाउ, एंड आई हैव अ स्कूटर। तो एक वक्त जिस बंदे के पास 6 7 गाड़ियाँ हुई करती थी, आज उसके पास 3 गाड़ियाँ बची है। कोई बात नहीं, वक्त बदलता है। 7 गाड़ियों को मिला के एक गाड़ी है। एंड एनीवेज, तो दैट्स इट फॉर टुडे folks। मिलते हैं अगली बार in a newer video showing you newer content. I'm improving myself, bettering myself. Hope you people are liking my vlogs, and please like, comment, share and subscribe. I am nearby to the 10,000 subscribers mark, so it will give me a achievement wala feeling, and I hope it's going to make a difference for me and all of you as well, because I'm gonna make better content hopefully, क्योंकि थोड़ा मोटिवेशन मिलता है तो बहुत कुछ बदलता है। एंड दिस इज़ इट फॉर नाउ, एज आई सेड अर्लियर। मिलते हैं अगली बार, टिल देन टेक केयर, राइट सेफ, बाय बाय folks, love us।